Hey everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to share a winter special dewy everyday makeup look, and for that let's start with the skin prep. And today's look is going to be a no foundation, no concealer makeup routine. Starting off with a moisturizer. It's very important to hydrate your skin before makeup so that your makeup looks like your skin only. So I'm using today Ayuga Kashmiri Saffron Cream. I love to use this moisturizer when I need extra boost of hydration into my skin, as it has super moisturizing formula and it's super duper lightweight. And we all know how beneficial saffron is as an ingredient, and my ma literally used to put saffron in every DIY mask, and this moisturizer reminds me of those masks. इस moisturizer पे है handpicked A++ Mongra grade saffron जो कश्मीर से source किया जाता है, and you guys know Kashmiri saffron has the most potent form of crocin in it, which makes the skin glow from within. And I love the formulation because of how lightweight it is and how quickly it gets absorbed into my skin, and ये बिल्कुल भी चिपचिपा feel नहीं देता है. And look at that instant glaze that it provides me. And this cream is made up of 100% natural ingredients, so I'm loving this cream absolutely, and I will highly recommend you guys to try this one. Link आपको description box पे मिल जाएगा. Go check it out now. इसके बाद मैं यूज करूँगी एक moisturizing primer because winter में काफ़ी ज़्यादा dry होता है मेरा skin. I have combination skin. If you have extremely oily skin, you can just use a silicone based or a gel based primer instead. I am just applying it on my face, मेरे nose को छोड़ के बाकी जगह पे. And this is Inside Professional का primer. It's very moisturizing, very hydrating, and it's affordable too. Next, I'm going to use a skin tint only. I'm not using any concealer or foundation today, and this is LAMEL skin tint. I'm loving the texture. The formula is very lightweight. I'm just using a brush, like back of my brush, to apply the product, and I'm using a brush, foundation brush, to blend this. And this is Kapsel Lashes ka brush. You guys keep on asking about this brush, and this is super amazing. The bristles are really soft, and you can see the finish of this tint. It feels like my skin only, but the coverage is so much better, and it gives you that dewy, healthy wala skin, which I love the most. Next, I'm using a new product. It's Swiss Beauty cheek blush, a blush stick actually, and ये जो शेड है मेरा, इसमें शिमर पार्टिकल्स है, सो दैट्स वाई मुझे इसके बाद कोई भी अलग से हाईलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. आई एम यूजिंग दैट सेम ब्रश टू ब्लेंड दिस, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बिल्ड द शेड बिकॉज ये थोड़ा लाइट है मेरे स्किन टोन से, बट आई लव द फॉर्मूला. बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है एंड लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, लाइक एकदम ड्यूवी वाला फिनिश देता है मुझे, एंड ऑल्सो स्किन टेक्सचर को एग्जैजुरेट नहीं करता. नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ कॉम्पैक्ट टू सेट माई इंटायर फेस बट माई ब्लश एरिया. नेक्स्ट उसके बाद I'm using LAMEL का eyebrow pencil, and I'm just going to fill the caps मेरे outer side पे brows के, and you can see कितना ज़्यादा difference ये create करता है face पे. Next I'm going to use Swiss Beauty Passport eyeshadow palette, and this is my current favorite affordable side में eyeshadow palette, and I'm going to pick this neutral, ऑलमोस्ट का कूल टोन ब्राउन शेड, यू कैन से, ऑन अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश. इसे लेके अपने क्रीज पे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, एंड देन पिकिंग दिस ब्राउन शेड ऑन एन एंगुलर ब्रश. इसे लेके मैं अपने एक विंग क्रिएट करूँगी, एक सॉफ्टर स्मोकी विंग काइंड ऑफ, एंड यू कैन सी आई एम यूजिंग माई फिंगर्स टू ब्लेंड द एजेस ताकि कोई भी हार्श लाइन्स ना आए, एंड मुझे एक नेचुरल लिफ्टेड आई लुक मिले. आई एम ऑल्सो एक्सटेंडिंग माई इनर कॉर्नर्स विद द सेम शेड, अप्लाइंग दिस न्यूड शेड ऑन माई सेंटर आई लिड एंड विथ माई फिंगर ओनली. उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एसेंस का मस्कारा, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट अप्लाई अ फर्स्ट कोट. उसके बाद आई एम गोइंग टू लेट इट ड्राई, लाइक सेमी ड्राई, एंड आई एम गोइंग टू कर्ल माई लैशेस. इसके बाद इससे क्या होता है ना, वो लिफ्टेड लुक मिलता है जो कि पूरा दिन लास्ट करता है. एंड इसके बाद मैं फिर से और एक बार लाइक कपल ऑफ कोट्स अप्लाई करूँगी सेम मस्कारा का अपर एंड लोअर लैशेस पे, एंड देन आई एम यूजिंग द सेम शैडो ऑन माई लोअर लैश लाइन एकदम क्लोज पे, एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड द सेम शेड विथ द fluffy blending brush, clean brush. Next step is optional completely. You can use a nude type pencil. I'm using here Revolution का streamline eyeliner. It's super pigmented you guys. मैंने अपने इसको 2023 pics में भी दिखाया था, top pics में दिखाया था. I'm lining my lips with a brown lip liner, and I'm just going to use a tinted lip oil because winters में lip balms and lip oils are just love. And this is my final finished look, but wait, we have to set our entire मेहनत in place, right? And for that I'm using in color का setting spray, and it's, I don't know, कोई बात नहीं करता, but
it's a really amazing setting spray, you guys. So yeah, this is my final finished look, you guys. This is my up close wala shot, and you can see my face is looking super flawless, natural, एवरीडे वाला बेस है एंड बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ करके लेस एफर्ट से हो जाएगा. सो आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा प्रोडक्ट्स का. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.